इसीलिए हम इनकी बात कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयज को भी एंगेज करना है। ये सिर्फ लीडर्स या किसी एक बंदे का काम नहीं है। ठीक है, ये इनसाइड आउट वाला मामला है कि अंदर से हमें तब्दीली लानी है, अपनी टीम को ट्रेन करना है मुझे, आपको, कि वो कस्टमर को रिस्पेक्ट करे। और जो है ना, रिकग्निशन बड़ी जरूरी है। उसको वो स्किल्स, वो टूल्स दिए जाएं कि वो कस्टमर चैंपियन बन सकें। तो ये जरा एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरी टीम मिलकर ये काम करेगी। तो ही जैसा इस वीडियो में एक्सपर्ट ने भी बताया कि वो सारे ही जनरल मैनेजर और जो फ्रंट डेस्क की टीम है, वो तमाम लोग इतना पेन ले रहे हैं और ज़्यादा कस्टमर हैरान हो रहा है कि यार नहीं मेरी इज्जत कर रहे हैं। सो एंगेज एम्प्लॉयज, मॉडल हो कस्टमर शुड बी ट्रीटेड। ठीक है जी, ये जाहिर है। वो क्या कहना चाहिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि अगर जनरल मैनेजर इस चीज को हाईलाइट करेगा तो जाहिर है नीचे वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स भी करेंगे। स्ट्रेंथन एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन, कि ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बाद में होगी, पहले एम्प्लॉयज़ को हम सेटिस्फाई करने की जितनी कोशिश कर सकते हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉय लॉयल्टी, तो इसमें जाहिर है कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल करें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को स्ट्रेंथन करें और उनकी जो लॉयल्टी है उस पर वर्क करें, ताकि ये फिर जाहिर है उसमें इसकी मैनिफेस्टेशन आएगी। इसका इजहार कहाँ होगा, कस्टमर्स के हवाले से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से। अच्छा जी, स्किल्स, तो ज़ाहिर है सर स्किल्स के लिए तो जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो कहा गया कि मुसलमान को इल्म हासिल करना है महद से लहद तक, अपनी वालदा की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। तो इसी तरह आज का इंसान, हर बंदा इस चीज़ को समझता है और ज़रूरी है। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और कस्टमर सर्विस के पे फोकस्ड हैं। और आपका एटीट्यूड, स्किल्स ट्रेन किया जा सकता है बंदे को। और एटीट्यूड जाहिर है इसके लिए थोड़ा सा है कि ट्रू टेस्ट ऑफ कस्टमर फोकस फॉर एवरी एम्प्लॉय, नॉट जस्ट फ्रंट लाइन। ठीक है जी, ये जाहिर है एटीट्यूड का जो मसला है, इसकी जरा सख्त मामला है। स्किल्स तो दिए जा सकते हैं, बताया जा सकता है दरवाजा कैसे खोलना है, हाँ जी, चम्मच कैसे चलाना है, लेकिन एटीट्यूड जाहिर है वो थोड़ा सा, इस पे जरा ज्यादा एटीट्यूड का प्रॉब्लम बास को अनचेक चला जाता है। तो इसमें ज़ाहिर है वो चैलेंजेस फिर हो सकते हैं और कस्टमर हमारा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो सेलेक्ट फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल्स, लेकिन जी यहाँ भी कस्टमर्स सेंट्रिक होने के लिए एक सोल्यूशन बताया जा रहा है कि आप राइट पीपल को हायर करें। बेस्ट एम्प्लॉयज़ के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सप्लेन करें इन एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ को जॉब कैंडिडेट्स तक। और कंसिडर ए वैरायटी ऑफ क्रिएटिव रिक्रूटिंग टेक्निक्स। जाहिर है रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, सवाल है बहुत बड़ा। आस्क योर बेस्ट परफॉर्मर्स टू सजेस्ट जॉब कैंडिडेट्स। तो ये वो करने वाले काम हैं कि जिसमें ट्रेनिंग तो हम बाद में कर सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन ज़रा एटीट्यूड का अमल पहला है कि अगर एक बंदे, आप चाहते हैं कि एक बंदा मुस्कुरा कर कस्टमर्स को मिले, एक फ्रंट डेस्क वर्कर, तो जाहिर है वो जो बंदा जिसका चेहरा आगे खिला हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तो उसके लिए वो जॉब आइडियल है। इन्वेस्ट इन ए मिक्स ऑफ ट्रेनिंग, तो इंटरपर्सनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जाहिर है उन एम्प्लॉयज़ ने जिन्होंने एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ रिएक्ट करना है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्रूव ट्रेनिंग विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इस पे ज़ाहिर है हम बात करते हैं, मिलकर इस चीज़ को समझते हैं कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कि तजर्बाती इल्म तालीम, ये क्या है। ले जी मिलकर देखते हैं। So in the late 1990s, I was the president of Boston Chicken, which also ultimately became Boston Market. And at that point in time, we had maybe 200, 300 stores. And I would go around the country and I'd take a look at these stores, and the service would be high in one place, really bad in another. I take a look at the food that we're serving out of, and it'd be in some places just hadn't been turned, looked almost baked over.
And the trays would be sloppy and not kept clean. I'd go in other stores and it looked fantastic. I had this huge inconsistency. And if I was experiencing it and feeling it, you can imagine what our customers were feeding back to us. So I was trying to really say, what's wrong here? And what are we doing wrong in the training of our employees in terms of basic hygiene, customer service, energy in the store? And I was really struggling on this. And Frank Wells, who at the time was the chief operating officer at Disney, he's a good friend. We lost him a few years ago in a helicopter accident. But he was a great executive. And I called Frank up and I said, Frank, you guys are killing me. I've got a problem over here. And it dawns on me, I think you've solved it. And how do you do it? How do you get the consistency across all these different businesses? And they all feel like Disney. And he says to me, do you really want to know? I said, yeah, that's the reason I called you. He said, well, here's what you're going to have to do. You fly on some Sunday evening to Orlando. And on Monday morning, we'll make you an employee. And we'll take you through how we orient all Disney employees. So, a few weeks later, I land in Orlando on a Sunday night. Monday morning, 8 o'clock. I'm in a classroom. Got about 80 other new Disney employees. A guy walks in the room and says, fill out these forms so you can now legally be part of Disney. It takes about 10 or 15 minutes. Then turns to us and says, hey, it's about 8:20 and the park's going to open at 10 o'clock this morning. Get out of here, go walk around the park. Watch us open the park. Talk to anybody you'd like to. See what people are doing and what they're focused on. Then stick around for about an hour or so after we open the park and just experience that opening process. Come back here at 11:30 and we'll wrap things up. So I did. I go out, I see what they're doing. People are sweeping the streets. They're actually scrubbing various handrails. They're singing songs. They're having fun. There's an energy, an intensity, an upness to all this. And it's just not orchestrated. It's just natural. And 10 o'clock, the park opens. Employees are looking the guests in the eye. They're grading them. They're asking if they can help. It was amazing. It's just the energy level was just phenomenal. So I go through this experience and I come back. And for me, I started to realize that in each region, I should create a training store. Take the best store, the store that has the best management, the highest quality of service, the cleanest store, day in, day out, and run all new employees in that region through that store so they could experience the right way. So the moral of the story is you experience values. You don't teach them. You don't put people in a classroom and talk about them. You let them experience them. And then after they experience them, you ask them what they experienced. And as they express what they experienced, they've got it. It's over. क्या बात है जी, जो 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 एक्सपीरियंस वैल्यूज, ठीक है जी, ये क्लासरूम में सिर्फ नहीं बताई जा सकती, बतानी ही चाहिए, लेकिन जाहिर है उन वैल्यू सिस्टम को आप यूं इनकलकेट कर सकते हैं. अलाइन टूल्स एंड सिस्टम्स विल, ठीक है जी, प्रोवाइड टूल्स एंड सपोर्ट की बात हुई कि हेल्प योर ग्रुप बेटर डिलीवर रिजल्ट्स कस्टमर वांट. Improve the way work is carried out by making process more efficient. Coordinate with the tools and systems used in other areas of business. तो आप tools और support provide करते हैं और फिर उसके बाद लोगों को even value system को inculcate करते हैं. Allow latitude within limits. So to grant latitude within limits, कैसे हो सकता है कि हम लोगों को लिमिट में रहते हुए उन्हें आजादी दें. Remove or alter processes or procedures. Set limits in one of two ways. Make sure latitude and limits enable employees to meet customer needs. Determine whether you have given your employees enough latitude. तो ये सर जाहिर है चीज़ों का जिक्र हम कर रहे हैं कि हम लोगों को लिमिट्स में तो रखेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये पैरामीटर है, ये हाथ लाइन है, इस लाइन को आप क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर रहते रहते आप इनोवेटिव हो सकते हैं. इसके अंदर अंदर रह के आप स्पेंडिंग कर सकते हैं. आप 5, 10, 20 डॉलर खरीदने के लिए जो है ना, वो टॉप सीईओ को लेटर नहीं लिखना, आपको ईमेल नहीं करते, इतना खर्च करेंगे और तो हम आप पे एतमाद करेंगे. तो ये जाहिर है
जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए आ, जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि clearly define what employees can and can't do, or define a core set of standards that employees must meet, but give them the freedom to decide the details of how to do so। ठीक है जी, आप लिमिट्स बता देंगे कि यार इतने पैसे आप खर्च कर सकते हैं, और डिटेल्स हम आप पे छोड़ते हैं, हम नहीं आपसे पूछेंगे। तो वारन बुफे का भी हमने कल जिक्र किया, या शायद क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में था, कि उसने भी कहा कि अगर आप मेरे पैसों का कुछ नुकसान कर दोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी कंपनी की रेपुटेशन पे अगर आपकी वजह से क्वेश्चन मार्क आया, ओ फिर मैं बड़ा रूथलेस हूँ। तो चलें यहाँ पर देखते हैं जी, एम्पायर एम्पावर योर कस्टमर फेसिंग एम्प्लॉयज, जी फ्रंट लाइन वर्कर्स का पिछली कई स्लाइड्स में जिक्र हो रहा है। तो यहाँ भी अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही हम ये समझते हैं, देखते हैं कि किस तरह उनको वो लैटिट्यूड विद इन लिमिट्स हम दे सकते हैं। To become a customer-focused organization, you need to give more power to the employees who know them best, your frontline staff. In our years advising companies on how to do this, my co-author Noel Tishy and I have identified 5 ways to break down those barriers and unleash the creative talent of your frontline workers. First, change the organizational context. Move from a top-down organization to one that empowers frontline employees. One CEO of a quick service restaurant initiated a $10 policy, empowering any employee to spend that much to fix a customer problem. Second, get rid of unnecessary work. We use a tool from General Electric asking people to identify unnecessary reports, approvals, meetings, measurements, and policies that get in the way of serving customers. It's called RAMP. Third, streamline the processes you do need. Pepsi's bottling division has, for instance, invested in handheld technology to optimize routes and inventory for its delivery drivers. The company then asked those drivers to spend the time they saved with their customers in their stores, identifying product display or cross-promotional opportunities that could boost sales. Fourth, get real-time data from the front line. Spanish fast fashion retailer Zara asks its store managers and salespeople for information on a daily basis. This includes not only quantitative cash register receipts, but also qualitative customer comments about things like color preferences or skirt lengths. The company can then quickly adapt the product globally or for a specific region. Fifth, deliberately promote multi-level and multi-generational collaboration. Crowdsourcing and internal idea markets are just 2 of the ways that leaders can encourage this sort of cross-hierarchical dialogue. A simple example was a retailer that put iPhones and protective case on a security cord, which only the store manager could unlock. Customers hated the policy because they couldn't pick up the device and easily get a feel for it. When the policy was changed based on frontline feedback, sales rose more than 30%. The idea is to get intelligence from the front line about what customers really want. Hierarchy gets in the way. It's your job as a leader to change that. सुभान अल्लाह। सर बाज़ औक़ात वो लगता है कि इंग्लिश बोल रहे हैं और ज़ाहिर है, आ, लेकिन बाज़ औक़ात वो वाला मामला ही होता है कि लगता है कि ये वो बातें कर रहे हैं जो कि करने वाले काम है। तो यहाँ ज़ुबान का चैलेंज है ही नहीं। यहाँ अगर आप मेरे साथ याद करें, तो जैसे कहते हैं ना 1940 करारदाद पाकिस्तान यहीं लाहौर में मंटो पार्क में, जिसे आजकल इकबाल पार्क भी कहते हैं, तो वहाँ पर वो मंजूर हुई, तो वहाँ कायदे आज़म ने तकरीर की। तो कायदे आज़म का ज़रा चैलेंज था कि वो इंग्लिश में तकरीर करते थे। तो कोई देहाती कोई वो तकरीर सुन रहा था और वो सर हिला रहा था, सर धुन रहा था। तो किसी दूसरे बंदे ने पूछा, यार आपको समझ आ रही है? उन्होंने कहा समझ तो नहीं आ रही, लेकिन जो बंदा बात कर रहा है दिल से कर रहा है। तो सर ये वाला मामला है कि जो कस्टमर फेसिंग एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, गेट rid of unnecessary work, streamline processes you do need, ठीक है, गेट रियल टाइम डेटा फ्रॉम द फ्रंट लाइन, ये जिक्र सारा उन्हीं का है, फ्रंट लाइन वर्कर्स का ही। प्रमोट मल्टी लेवल एंड मल्टी जनरेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है जी। थोड़ी देर पहले मैंने जनरेशन जी की बातें भी की, तो ज़ाहिर है ये सारी जनरेशन्स बाहर, जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, सब काम कर रहे हैं मिलकर। तो इन इन लोगों ने, इन सारी टीम्स ने मिलकर ही मसलों के हल निकालने हैं। तो वो इस वीडियो में भी जिक्र हो गया।